आज क्लास को थोड़ा सा स्टार्ट लेट्स सी कि स्टार्ट इस तरह होता है. ठीक है बेटा. ओके, लेट मी प्रेजेंट. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. And today we are looking to have the connection of the discussion about the total quality management system, and that is what we call the TQM and continuous improvements. Okay. Before this one, if you look back in on your course schedule when we discussed in the first lecture, so that was about the let's say about the what we say discuss. We were talking about that we will discuss the the quality aspect. Okay, and then we will discuss about the so we discuss a few lecture about the quality definition, what we mean by quality, and then we jump into the section of the metrology. And then if you remember, I did tell you when we come back, so we will have a few lecture about the quality management, and then we will go to the control charts. So we are looking to have a few lectures, a few weeks. For this one, we will discuss about the quality, and today we are going to have the total quality management system. Anybody, what do you mean by total quality management system, or what we call is the TQM? Because we discussed uh, this TQM or this approach quite few times. So anybody would like to make any comment? सर ये एक डिपार्टमेंट है सर, ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए यूज होते हैं ना. अगर फर्दर हम लोग क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये डिपार्टमेंट है. It is not. No, no, no. It is the quality assurance. You talk about the quality assurance, quality improvement, quality control. So these are not the department. These are different techniques that are used to improve the quality, to control the quality, to manage the quality of a product or service that you are going to deliver. Okay, so TQM is another kind of approach or technique or philosophy that is being used by different companies around the world to improve their product, to control the quality of their product, to improve the quality of their product, to ensure the quality of their products, for better product delivery and better service delivery apart from on the behalf of their organization. So TQM is not a department. Yes, there is a specific section in each and every organization which deal these kind of
techniques which deal these kind of approaches. So, but they are working. TQM does not mean it is a department. Quality control does not mean a department. Quality control is a technique, is an approach, as a procedure that can be used to control the process or to manage the process or to improve the quality of the process, to improve the delivery of the process, to improve the productivity of the process, and that is what we call the TQM. And we discover, so if you look at the individually, the quality assurance, if we just study the quality improvement individually or quality control, so these are independently each and every technique. But when we talk about the TQM, so we are covering all these techniques, whether it is a quality assurance, whether it's quality control, or it is quality improvement. So this is an overall, you can say that the check on all these kind of the technique to ensure that the product or service that is being delivered, that is of quality. समझ आ रही बेटा? जी सर. Okay, so TQM is what we mean. When we talk about the TQM, so the TQM means that our aim is to have a zero defect. What we mean by zero defect? If we talk about the zero defect, what does it mean? 100% conformance. 100% conformance to what? Error free, sir. Errors free. Yes, no. What we mean, he's talking about that there is a To its 100% function, sir. conformance. So To what its, we mean by the 100% conformance to what? to its function. Customer satisfaction, sir. To the quality standard. 100% conformance to the quality Standards. standard. Whatever the standard we are using, it means that no product is out of the standard. Every product meeting the product. So when you have every product, let's say if you are making 100 product per hour and you have a 24-hour shift, so you mean you are making 2400 product per in a 24-hour. So that means that 2400 products will be of having zero defect. So each and every product will be of quality. Each and every product will match the requirement of the product. So when we talk about the conformance to the quality standard, so that means conformance to the conformance to the quality standard, conformance to the customer satisfaction, conformance to the increased productivity, conformance to the reduction of error, conformance to the following the standard, conformance to having the health and safety issues. So all these will be part of that zero defects. Okay, but when we discuss that this is one factor that the TQM means, or the TQM approach, that it will have a zero defect. Secondly, when we talk about the TQM, so TQM is also talk about that there will be an affordable price for the satisfaction for the customer behalf. If you talk about, if you keep the price high, so maybe the customer does not happy with that one. So the TQM also cover that the product should be having an affordable price. And then we talk about when we discuss the quality, and when we in contrasting, so there is a contrasting approach that when you have a quality, so definitely the price will go up. But not, this is not, because when we do not follow the quality, so that will lead toward not a zero defect. So that not having a zero defect, that will increase the cost of the product. But when you have a quality, that will definitely have a increased productivity, and the increased productivity will reduce your cost of the product as well. समझ आ रही बेटा? जी सर. Let's say what I mean, that I say that if you have, let's say, if you have a quality, and if this quality is reduced, so your productivity will also be reduced. How the productivity will be reduced? Let's say if you have 100 products per day, and if you have 10% defects, so this 10%, it means you are
providing you are selling only 90 products. समझ आ रहे बेटा? जी सर. But you are costing the customer with these because you have to cover this 10% cost too. Okay? So that will reduce the productivity. Okay? And then your cost will also be going down. But if you are 100% product, there is zero defect. So that means you are selling 100 products. So you have an increased quality. Your product is also increased and your cost will bring down comparatively. समझ आ रहे बेटा? Yes sir. But sometimes when you think that the quality is a product and then we will have a low cost, so you, like for example, if you go to the shop and you say that if we buy an expensive shirt or an expensive trouser or an expensive jacket, so that will have a good quality. Does not necessarily. Okay, sometimes this is the other way, the opposite approach as well. You can have a good quality with a low cost, but that depend all on the productivity of the organization. Okay, beta? Yes sir. Then we generally talk about the safety, but when we ensure that there should be a health and safety for the product, that for example, if the product you are delivering to the customer or delivering to the market or launching in the market or launching for the society, benefit of the society, that should have a health and safety rule first. Okay, that should not help harm the environment, that should not harm the health of the society, and that should have a good health and safety environment within the organization for the worker, for the people, and for the management as well. Okay, so the safety is also one of the key parameters in the TQM approach. Okay, beta? Yes sir. Then we talk about adherence to the standard, satisfaction or just conformance to the standard. As we discussed, that there should be a 0% defect. So that means that you are, for example, if your dimension, if you are making this product, let's say, and there is a, let's say, the dimension is, let's say, 2 plus minus 0.02, and this dimension, it's say, let's say 2.7 plus minus 0.03. समझ आ रहे बेटा? Let's say the thickness of this one is let's say 0.3 plus minus 0.01. Okay beta? And there is a roundness in the system, so this roundness is radius of, let's say, 0.5 plus minus 0.12. Okay beta? Let's say the surface finish is of having roughness is 2.3 micron plus minus 0.02. समझ आ रहे बेटा? या आपका जो स्टैंडर्ड है कि आप जो भी आप स्टैंडर्ड इसमें यूज करें. Now, if you check this one and that is okay, if you check this one, that is okay, if you check this one, that is okay, and if you check this one, yes, so all this have a quality standard. So that means adherence to the quality standard or the standard, whatever the standard you are, means that is being satisfying or that is being confirming the standard that you are required to produce the product within that range. Okay, so that is also another key parameter of the quality of the TQM approach. Then we can have another, like for example, if you have a system like this one, and we have 3 machines here. Let's say this is machine 1, machine 2, machine 3. This is the assembly line. The raw material comes, and here
we have the finished product. Okay, this goes from this machine 1 and this goes, and suddenly there is, we need to have a product to process on machine 2 first, and then to machine 3, and from machine 3 to 1, and then going to the finished bay. समझ आ रही बेटा? Because this is the requirement. Yes, sir. So that means this system, whatever the system you have, that need flexibility, that need to accommodate the changes that is being required to finish the product with a different perspective. Okay, beta, let's say if you have a product like this to be manufactured, like rivets or anything, okay. So for this one, this setup was okay. But now, if you want to have a product like this one, like this one, like you need to have a stand or something. So this system need to have a flexibility to produce this part as well. So that needs flexibility and adaptability to the change, and it can accommodate the changes that is being required to finish the different product. It is also on part of the, like, this is the technical flexibility and adaptability I'm talking about. But in terms of management, it also need to have a flexibility for a worker. It need to have a flexibility for other people, and it also have to adaptability to change. Like for example, nowadays the organization, like for example, we for the last 2 years almost we have COVID-19 pandemic. So now the organization has the flexibility and adaptability to change. The changes in response to the COVID-19, how the system responds, how the organization adaptable or adapt themselves to the changing environment, how much they are flexible in terms of accommodating the demands and the ensuring the job security of their worker, and also to deliver a quality product to the customer and to the society as well. So that is what we mean flexibility and adaptability to change. Okay. Yes, sir. Okay. Then at the end, we also another key parameter of the TQM approach. That is what we mean. At the end, we need to have a customer satisfaction. If the customer is not satisfied about, despite all these what we discussed in the previous slide, still your TQM does not work. Okay. Yes, sir. Okay. So now, if we look at this one, that if we talk about the zero defects, that there should be a zero defect approach. It should be having an affordable price. It should have a quality and low cost. You also deliver the quality, and you also deliver the quality at a low cost. And you talk about the safety of the environment, safety of the worker, safety of the health, and safety of the overall the product and service and the people around with that one. You talk about adherence to a standard. You talk about the flexibility and adaptability to change that is being happening, and you at end you are talking about the customer satisfaction. So all these combine to have a good quality. That is what we call the TQM approach, and that is what we mean the quality TQM, total quality management system. Because why that the TQM was adopted, or why the TQM was invented, or why the TQM was you can say produced or just like presented to the company, that this kind of approach, why it was started, why it was felt, what was the need of TQM. Because in 1980, and it was started from the Japanese concept about that one. So it was looking to around this one, that 1980 to 1982, the Ford Motor. Anybody know the Ford Motor Company? Yes, sir. Which type of product that was being used to run or using
are being used in Peshawar about for the Ford Motor Company? What product is being used in Peshawar? सर लोकल जो फोर्ड उनकी वो होती हैं सर, लोकल ट्रांसपोर्ट जो है फोर्ड की है सर। वो कौन सी है? वेगन ब्रेड सर। फोर्ड के क्या नाम है उसका, ऐसा नाम? वो जो जिसको आप वैगन कहते हो, क्या कहते हो नॉर्मली? यस सर, वेगन कहते हैं, वेगन। वही है, ठीक है। दैट इज व्हाट द बेसिक प्रोडक्ट ऑफ द फोर्ड मोटर कंपनी, and because the Ford Motor Company was having a operating losses of around 3.3 billion between 1980 and 1982. Xerox is another electronic product. You know that they make a different type of products of electronic, like these hard drives and all these kind of things. Their share was also dropped 93% to 40% in a span of like from 97 to 1988, 81. So that was a drop of around, let's say, 53%. So that is a huge loss for the company. So then the management felt that there should be something that we should talk about. We should address this issue, that why there is a billion operating losses and why the market share is being dropped. So then the attention to the quality was seen as a way to combat the competition. And if you remember, when we discussing at the start, we were talking about that there is a 3 factor for the company organization that they can compete on. Number one, what was the 3 factor? Number one, quality. Number 2, anybody? कॉस्ट सर। जी, cost. Number 3, कॉस्ट। last one. Productivity. जी, Productivity. no. Delivery, service, the response, delivery time, that how much fast you deliver the product. Okay, so then they say that only at that point they felt that there shall be something, that there should be a one way that we should improve the quality and we should come back this competition. Otherwise, we will be losing all the share and we will be having a huge losses, and the Ford Motor Company will be lost, and the Xerox will lose all its market share in the coming year. So that's why they felt, and that was the start of the quality management system, that there should be a proper approach within the organization to combat or to ensure the quality of the product as well. So the quality TQM was a buzzword using a different popularity, but at that time, the many companies, the term TQM is associated with the corporate program in 1980s and mid 1980s and 90s. They were thinking that at implementing employee teams and statistical process control, because the people were thinking that we need to have a statistical process control and have to implementing an employee team. Just we can have a look after this statistical process, and if there is any kind of mismanagement or is any kind of the, let's say, the non-adherence to the quality standards, so we should find out. But unfortunately, most of the companies were dissatisfied with the perceived result of these programs, and they were concluding that the TQM does not work, because yes, at somehow they might be justified, but why they were dissatisfied, because it was just a very slow process. For example, अगर आपने घर में अपने बच्चों की तरबियत करनी है और उनकी जहनी उसको चेंज करना है, अप्रोच को चेंज करना है, तो दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. समझ आ रहे बेटा? इट डज नॉट वर्क इन hours and minutes and days. It take long time that they can leave their habitual just like behavior or attitude, and they can come to what kind of person you want to make him. समझ आ रहे बेटा? Yes sir. Okay, so for that reason, because the company does not have much time, and this kind of work, like if you change the culture, for example, अगर आपने
यूईटी में भी देखा हो तो यूईटी में एक जनरल का, अगर आप किसी ऑफिस में जाए और एक क्लर्क से बात करें, एक असिस्टेंट से बात करें, तो that their general approach is just like you can have this what do you mean delaying tactics. They will, oh okay, you will do it, or Turasha, or this is general approach. But if you would like to change this approach, it's take years and ages to change this approach. Okay, so that is what we call the cultural change. And because of this one, the company was dissatisfied with this kind of thing, that it does not perceive the result. But these kind of result cannot be perceived or cannot be produced or cannot be observed within a minutes or within a day or within a year. It will take a long time within the company to take result. And because were they just satisfied? Justified? Yes, they were justified, because that the company were investing on these kind of technique to improve the quality, but the result was not that much what they were what they were believing or what they were expecting. So when the result is not according to your expectation, you definitely have a different view about that product or service you have invested in. Okay, beta? सर ये जी लॉन्ग वजह से है ना जी सर, ये जी बेटा, डिससेटिस्फाइड जो टीक्यूएम से लोग डिससेटिस्फाइड थे, तो वो सिर्फ ये लॉन्ग टर्म की वजह से कि जल्दी जो हमें उसमें फायदा नहीं और मिल भी सके, रीजन, लॉन्ग मैं टर्म से जनरली उसमें बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं तो एक जनरल अप्रोच की आपको बात कर रहा हूँ कि इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि आपको एक रिजल्ट को जब आप किसी कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट देखने के, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा, अगर आप मशीन में कोई चेंज करते हो कि ये 3 डिग्री एंगल से 4 डिग्री, फॉर एग्जांपल अगर आपने एसी चेक करना है, एसी अगर फॉर एग्जांपल 26 डिग्री सी पे लगा हुआ है और आप इसको 20 डिग्री सी पे है, तो एकदम यू कैन फील द डिफरेंस एट वेरी abruptly. ओके बेटा, इट टेक हार्डली 5-10 मिनट टू चेंज टू फील द डिफरेंस. बट इफ यू से दैट ये जो मेरा बेटा है, ये आजकल जो सारे बच्चे हैं ये वो गैजेट्स और इन चीज़ों के साथ ज़्यादा अटैच हुए, अगर मैं इसकी बिहेवियर को चेंज करता हूँ तो कितना टाइम आपको लगेगा इस बिहेवियर को चेंज करने में? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सर. ओके, सो दैट वाज द टाइम. लेट्स से एक कंपनी जो है जो 1980 से एक ईयर से, लेट्स से एक कंपनी 1920 में बनी है और 1980 तक वो एक खास कल्चर के साथ काम कर रही है, और आपने 1980 के बाद उसको कहे कि हम अपने इस कल्चर पे काम कर रहे हैं, तो उनका जो जहनी एक जो चीज़ बनी हुई है, जो वर्किंग कल्चर है वहाँ पे जो बना हुआ था, that was time consuming to change that culture, because it was taking an years and years to change the culture. And once the culture change, जब एक culture change आ जाती है तो फिर you can feel the difference as well in the system. Okay? अब आपका ये जो culture change है, ये आप 19 let's say आज 220 है, 2020 है, if you go back to 200 like 1999, if you have a difference of 20 years back, could you see that how the social culture will be changed with the use of this social media? जिस वक्त फेसबुक पहले लॉन्च हुआ 2003-4 में या 2002 में, या मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि वो किस वक्त लॉन्च हुआ, 4 में, डिड यू थिंक कि जो फेसबुक है उसका जो वो पूरी दुनिया का जो नक्शा है या जो लैंडस्केप है, सोशल लैंडस्केप है, वो चेंज कर देगा इस तरह? जी जी बेटा, हेलो जी सर. डिड यू थिंक? नो सर. But now you can say up to 20 years, it took 20 years. But now the social culture has changed. You can think of so many things that how they are changing now. Okay? Yes sir. Yes This sir. is how I say it.
that it taken years and years just to change the culture, to bring a cultural change. So the TKO means that there is a total made up the whole, like what we mean, anything that is in total quality, degree of excellence, a product or service provide. Management, it is an art, it is an act, it is a technique, it is a manner of planning, controlling, and director. So when we say that therefore the TQM is the art of managing the whole to achieve excellence. Whatever your main expectation is, your main target, that whatever I do, whatever I deliver, whatever I make, three things: whatever I do, whatever I make, and whatever I deliver, that should have an excellence. So this is the target. So the TQM is generally, it is an art, it is a manner, it is an act, it is a management approach, or it is a technique when you managing the whole system for the purpose to achieve that target, which is excellence in nature. Okay, that is what we call the TQM. Okay. Yes, sir. Now, what does TQM mean? The total quality management means that the organization culture is defined and support the constant attainment of customer satisfaction. Not only once, it have a continuous satisfaction of the customer through an integrated system, tool, techniques, and training. Like, let's say, if you talk about the mechanical department, so the student, the staff, the faculty, these are the three pillars within the department. समझ आ रहे बेटा? Staff, student, faculty, and then along with that will support staff. If they are not working with integrated approach, then we have the labs, we have workshop, we have a different account section. All these are support section. If they, and whatever the technique and training what we do, if they are not working together for the achievement of excellence, then it does not work. But if they are working integratedly, if they are working with each other cohesively, if they are apply the technique and training that is integrated to each other, that is connected to each other, so that the only way to achieve the excellence in the graduate that we produce. समझ आ रही बेटा? Yes, sir. And this involves the continuous improvement of, and this is not being like, for example, हमने 2000 लेट से 2018 में हमारे ग्रेजुएट ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो हम बस हम कह के नहीं, हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो होगी नहीं, 2019 में उससे अच्छा होना चाहिए, 2020 में उससे अच्छा होना चाहिए, and then it goes on with the continuous improvement. Okay, ठीक है बेटा? Yes, sir. And that should result in a high quality product and service that deliver the department to the society. Okay, what's the goal of the TQM? Do the right thing. For example, हम एक काम करते हैं, for example, आप एक प्रोडक्ट बनाते हो कंपनी में, ठीक है बेटा? एक वर्कर है, एक मशीन पे काम कर रहा है, उसके पास एक रॉ मटेरियल आता है और इसने इसको दूसरे मशीन पे भिजवाना है. Let's say we discuss this one. यहाँ से यहाँ तक इसका ये जो is take around 2 minutes to finish this product. ठीक है बेटा? And he works on this one, and he does not like this one. He delivered, and it's returned back. So it took another 10. Maybe it does not take 2 minutes. Then it may take 5 minutes again to readjust that product for the confirmation of the machine too. Okay बेटा? So what did he? अगर इसने इस तरह किया होता कि ये जो पहला काम जब ये कर रहा था, तो ये अगर पहले अच्छी तरह से करता, तो क्या इसका जो वापस इसको भेजता? Will them to return that one? No, sir. फिर नहीं भेजता ना, अगर अच्छे ही करता तो फिर क्यों भेजता? Why he send it back to them one? क्योंकि उसमें खराबी थी ना सर, डिफेक्ट्स थे. If he did, he would have done the job right, things right the first time, and then every time he do the same thing.
So this is the quality TQM approach. The goal of this one, that do the right things right the first time and every time you do it. समझ आ रही है बेटा? जी सर। Do the right thing right the first time and every time. Like for example, अगर आपका क्वालिटी का पेपर है, ये आप पहली दफा इसको ले रहे हो अपनी करियर में, जो आपकी ये मैंने इंजीनियरिंग करियर है, quality engineering you are taking for the first time. So you do give 100% time to this one, 100% struggle to this one, and you do the right thing right the first time. So क्या आपको दोबारा इस प्रोडक्ट को या इस प्रोडक्ट ग्रेड को इम्प्रूव करने की जरूरत होगी? मेरे ख्याल में नहीं होगी। नहीं सर, And नहीं होगी सर। similarly, if you do this approach every time you do the thing for the first time, and you do it rightly and you do it on time, so that will give you 100% result each and every time you do it. Okay? So वो जो आप कह रहे हो कि जो 0% डिफेक्ट्स है वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा? यस सर। अगर आप 100% कन्फर्मेंस चाहते हो तो ये आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो करना, एंड दैट इज व्हाट द गोल ऑफ द TQM. Another way we can put it like this one, that TQM as at all manager is all managing, leading and facilitating all contributor and implies two main objective. Number one, everyone's to, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेट्स से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ से एक रॉ मटेरियल और यहाँ से कस्टमर को एक कस्टमर प्रोडक्ट जाता है। ठीक है बेटा? अब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम करते, जो मैनेजर काम करते, जो लीडर्स काम करते, जो फैसिलिटेटर काम करते, कुछ भी एक कंट्रीब्यूटर, ऑल दिस, इनकी ये हर एक बंदा, एवरीवन फ्रॉम लो मैनेजमेंट टू द टॉप मैनेजमेंट, फ्रॉम दी लेट्स से दी गेट कीपर to the CEO of the company. ये गेट कीपर मैंने सबसे लोएस्ट ग्रेड की बात की है, और CEO मैंने क्या बात की है? टॉप मैनेजमेंट की बात की है। सबसे यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी कंपनी की दो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। नंबर वन, टोटल क्लाइंट सेटिस्फैक्शन थ्रू a quality product and service, not with something else. You only satisfy the product with the quality, the client or satisfaction, satisfy the clients and the customer with only the quality product and the service you did. And secondly, you improve your, like for example, अगर आपसे आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर सही है, लेकिन it does not mean कि आप बस आराम से बैठ जाएं and then you do the same thing every time. No, you work continuously on your processes, your system, your people, your suppliers, your partner, your products, and all the services you do to improve their services continuously. अगर आज आपने एक बंदों की ट्रेनिंग की है 100%, तो आप एक साल बाद दोबारा उसकी ट्रेनिंग कर ले, 3 साल बाद, 1-2 साल बाद और कुछ और ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कर ले, ताकि उनकी जो लर्निंग है, जो उनकी इम्प्रूवमेंट है, साथ साथ वो चलती रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने TQM, अगर कंपनी पहले अच्छी काम कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी, लेकिन इसमें कोविड आया, तो कोविड के लिहाज से इस कंपनी ने अपना सिस्टम सारा शिफ्ट किया। उस शिफ्टिंग के लिहाज से उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी होनी चाहिए, उसकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी होनी चाहिए, उनके प्रोसेस में चेंज और उसका सिस्टम, पीपल, सब में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है बेटा? जी सर। ओके, नाउ प्रोडक्टिविटी एंड PQM, हम ट्रेडिशनली हम देख रहे हैं कि इफ यू हैव अ क्वालिटी and then you have the productivity. If you remember, I did tell you that why the quality, there was a quantity and there was a quality. Before the World War II, there was an approach, there was, like you can say, attention toward the quantity. But
After this one, the paradigm was shifted and the attention from quantity was shifted towards the quality. here it was all on productivity. And then the people thinking that if you talk about the quality, so definitely your quantity will be reduced. समझ आ रहे बेटा? Yes, sir. So that said that traditionally the people were thinking that the quality cannot be improved without significant losses in productivity. Unless and until you do not reduce your productivity, your production, like for example, अगर आप पहले 100 parts पर डे बनाते थे, तो अगर आप इसको अब भी 100% 100 parts पर डे बनाते हो, तो आपकी क्वालिटी वैसी की वैसी रहेगी, क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी. और अगर आप 100 की बजाय अगर आप 100 की बजाय 50 पे आ जाए, so फिर आपकी प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगी, and then it is a chances that your quality may be increased, improved. That was what the traditional view about this one. But the TQM view, what about the TQM response to this one? They say improved quality leads to improved productivity. How? Anybody would like to make any comment? अगर सर अच्छे क्वालिटी से आप बनाओगे तो सर फिर उस पर दोबारा रिवर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा टाइम ज़ाया नहीं होगा, तो इससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकती है. गुड. और तो अगर आपका जो है जीरो डिफेक्ट रेट्स. यस सर, अगर उस पर डिफेक्ट्स होंगे तो फिर आपको दोबारा उसमें रिवर्क करना पड़ेगा, टाइम ज़ाया करना पड़ेगा, कॉस्ट लगाना पड़ेगा. तो वो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चलो 50 में प्रोडक्टिविटी को आप रिड्यूस भी करी, लेकिन अगर आप ये प्रोडक्टिविटी आपकी प्रोडक्टिविटी जो जीरो जो डिफेक्ट रेट्स है वो रेट से 10% है इसमें. अगर आप इसको इम्प्रूव करें 100% को, और अगर उसमें भी 10% डिफेक्ट रेट्स हो, इसको फिर इम्प्रूव करें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए. ठीक है बेटा? यस सर. Okay, so the basic tenets, principle of TQM, that the customer make the ultimate determination of quality. That is what we know. Top management must provide leadership and support for all quality initiatives. Yes, it's true that unless and until the top management is not interested in quality improvement, it will not work. Preventing variability is the key to produce a high quality. Variation, मैंने आपको कहा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये जो मेट्रोलॉजी है about that is used to control to take measurement, and if there is variation in the measurement, ठीक है, so we need to control the variation minimally. Like for example, अगर आपका 2 ± 0.2 है, so इसका मतलब ये है कि आपका जो मैक्सिमम अल्टीमेट लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है वो 2.02 है और मिनिमम जो है 1.98 है. ठीक है बेटा? यस सर. और आपका ये जो है 2 है, सो हमारी वेरिएशन यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए. अगर ये वेरिएशन इस तरह है तो इसका मतलब वेरिएशन ज़्यादा है. अगर ये वेरिएशन आपने कंट्रोल की तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा होती जाएगी. सो वी नीड टू प्रिवेंट वेरिएबिलिटी is the key to produce high quality. जब जितना आप इस वेरिएशन को कंट्रोल जल्द करेंगे, that will leading toward a high quality product in the service. Quality goals are moving targets. Now, for example, thereby requiring a commitment toward the continuous improvement. Let's say आपका जो टारगेट है ये है, और टारगेट ये है कि मैं 100% इम्प्रूवमेंट लाऊं, 0% डिफेक्ट लाऊं. अगर फॉर एग्जांपल शुरू में आपने अपने लेट से अगर आपके वालिद साहब है, उसने आपको पहले ही पता है कि आप जब पहले सेमेस्टर में जाएंगे या फर्स्ट ईयर में, लेट से फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, आपकी सीजीपीए मुझे 2.7 से कम नहीं होनी चाहिए. आपके सामने उसने टारगेट रखे. ठीक है बेटा? जी सर.
तो दैट इज व्हाट द टारगेट फॉर द फर्स्ट ईयर। देन सेकंड ईयर के लिए उसने आपके पास है कि ये 3 से कम होनी चाहिए, तो ये मूविंग टारगेट्स है। फिर थर्ड ईयर पे उसने आपको कहा कि 3.2 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। और फोर्थ ईयर पे आपकी ओवरऑल है, उसने आपको कहा कि 3.5 से कम, तो ये मूविंग टारगेट्स है सर, ठीक है बेटा। यस सर। नाउ इन फॉर एग्जांपल 2.7 से 3, 3.25 या 3.5, अब इनको अचीव करने के लिए व्हाट डू यू नीड? शाबाश। कंटिन्यूस मेहनत इम्प्रूवमेंट। करी, मेहनत करेंगे सर। इस मूविंग टारगेट को अचीव करने के लिए या उनकी एक्सपेक्टेशन को रिक्वायर करेंगे, आपका जो कस्टमर है वो आपके पेरेंट्स है अभी इस वक्त, ठीक है बेटा। अगर वो यस आपसे सर। सेटिस्फाइड है तो ठीक है, अगर वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप उनके साथ कुछ जो है मिस कोटिंग उसको करोगे या उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, एंड so they will at the end, and if they know the real situation, so they will dissatisfied with your results, with your whatever you call it. So ये एक moving target है। Now to achieve the moving target, you need a commitment toward this continuous improvement. Number 5, improving quality requires the establishment of effective metrics. We must speak with data and facts, not just opinion. अगर आप कहें कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, वाले साहब को कहेगा, अगर आपने उसको कहा कि लास्ट ईयर तो आपकी रिजल्ट ही थी, सेकंड ईयर आपका रिजल्ट ये है, तो आपने उसे कहा कि मैं तो इंप्रूव कर रहा हूँ, बस ठीक है सर, मैं बाबा मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है, अगर आपके पास कोई CGPA रिजल्ट नहीं है, अगर आपके पास अपना ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, तो ये डेटा जो है ये क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट जो है ये दीज आर जस्ट स्टेटमेंट, दीज आर जस्ट ओपिनियन, इट कैन नॉट वर्क। और अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट हैव, अगर आप कहें कि मैं क्वालिटी हम इंप्रूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एज अ डिपार्टमेंट क्लेम करें कि हमारी क्वालिटी इंप्रूव करें, तो उसके साथ बिहाइंड पे कुछ डेटा होनी चाहिए जो हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट करे, ठीक है बेटा। वो डेटा क्या होनी चाहिए कि हम कहें कि लास्ट 2 ईयर से हम अपना ग्रेजुएट्स का जो एम्प्लॉयमेंट है वो अगर हम ऑब्जर्व करें, तो हमारी ग्रेजुएट्स की जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऐसा ऐसा इंक्रीज कर रही है कि लास्ट ईयर हमारे इतने ग्रेजुएट एम्प्लॉय हुए थे, इस साल इतने हैं, नेक्स्ट लास्ट 5 ईयर का डेटा हम अगर तो 10, अगर उस पर कोई इंप्रूवमेंट आ रही है तो हम कहें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंप्रूव कर रहा है, ठीक है बेटा। जी सर। तो इस लिहाज से whenever you talk about improving the quality, it need a data, it need a proper matrix, it need a proper like you can statistics for the product. Like for example, अगर आजकल आप कहें कि कोविड के केसेस डाउन हो गए, तो उसके बिहाइंड कोई डेटा होगा, ठीक है। यस सर। अगर लास्ट 1 ईयर 1 महीना पहले वो अगर ज्यादा थे तो उसके बेस पे कोई डेटा था, अगर उससे कुछ ज्यादा थे तो वहां भी कोई डेटा था, ठीक है बेटा। तो these are all the statistics data and they you need to speak with data, not just an opinion, okay बेटा। So there are 6 basic concepts of the TQM. Number 1, you need a management commitment, you need to focus. The first one is on the what we call is the management commitment towards the TQM principle and method and long-term quality plans for the organization. If the management is not agree that I can have a long-term 2-year, 3-year, 4-year plans for my company, so that does not work. ठीक है बेटा। Focus on customer, whether it is internal or external. Quality at all level of workforce. ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल गेट पे कोई चौकीदार खड़ा हुआ है, उसकी कोई क्वालिटी डायमेंशन नहीं है, नहीं क्यों नहीं है? Whenever he speak with people, visitor, whenever he talks with visitor, that should have a quality level of quality, ठीक है बेटा। तो ये ऑल वर्कफोर्स पे है, फ्रॉम 0 से लेके 100% टॉप रिजल्ट तक भी ये सारी मैनेजमेंट जो क्वालिटी लेवल है, एट ऑल लेवल देयर शुड बी अ क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक है बेटा। Number 10,
So one, Yes, sir. you can talk about two, you can have three, and then the four is the continuous improvement of the production and business process. Whatever the business process, whatever the production process that need a continuous improvement. Treating supplier as a partner. If you are just supplying, treating supplier as just a supplier, so he will not care about your product, whatever he just supply. But if you treat them like supplier is also part of your organization, so then he will work for his product, and he will think that if this company product is success, getting success, so that means that I'm getting success. Okay. And then establishment performance measure for all process, and you need to have वो जो कहते हैं ना कि जजा और सजा का अमल होना चाहिए. If somebody work good, he should be rewarded. If somebody not good, work good, he should be instructed, he should be consulted, he should be trained. And since if he doesn't work, so then um, you can do something with him. Okay? ठीक है बेटा? So these are the 6 basic principle concept of the TQM. The 3 aspect of the TQM. Number 1, एक तो आपकी जो टूल्स है काउंटिंग की, आपके पास एक टूल होनी चाहिए ट्रेनिंग के लिए कि दैट विल बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द क्वालिटी प्रॉब्लम. देन योर कस्टमर क्वालिटी फॉर द कस्टमर एज अ ड्राइविंग फोर्स एंड सेंट्रल कंसर्न. एंड कल्चर, शेयर्ड वैल्यू एंड बिलीफ. अगर आपकी ये कल्चर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो भी अगर सक्सेस है वो भी हमारी शेयर है, अगर नुकसान है वो भी हमारी शेयर है. ठीक है बेटा? And they can be expressed by leaders that define and support the quality. ठीक है बेटा? So these are the 3 basic aspects of the TQM. What are the different tool you are using? What is सर your ये जी बोल रहे हैं सर ये बेटा? तीसरी पॉइंट की समझ नहीं आई. किसकी बेटा? ये कल्चर सर, ये कल्चर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूईटी में एक कल्चर, अगर चौकीदार से लेके असिस्टेंट से लेके लैब असिस्टेंट से लेके फिर आप जाएं लेक्चरर से लेके लैब इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, फिर आप आ जाएं अकाउंट्स में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और 12 वाइस चांसलर, यहाँ तक ये सारे लोग स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी. ठीक है बेटा? स्टूडेंट, फैकल्टी, सपोर्ट स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑल एवरीबॉडी डज नॉट बिलीव कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए. तो ये कल्चर फिर दिए, इसमें फिर इक्वे में अप्लाई नहीं होता. इसमें हर एक बंदे को एक शेयर्ड वैल्यू है, शेयर्ड बिलीफ के साथ आगे चलना है. ठीक है बेटा? यस सर. आप कहें कि फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट कामयाब होते तो हम कामयाब होंगे, अगर स्टूडेंट कामयाब नहीं होते तो हम कामयाब नहीं हो रहे. एवरीबॉडी थिंक लाइक दैट. ठीक है बेटा? जी. यस सर. Okay. So the total quality management and continuous improvement, the TQM is the management process used to make continuous improvement at all functions. TQM represent an ongoing continuous commitment to improvement. The foundation of total quality is a management philosophy that support meeting customer requirement through the continuous improvement. आपकी if we talk about the continuous improvement versus traditional approach, a traditional approach क्या है कि आपका अगर एज ए कंपनी आप सिर्फ मार्केट शेयर पे फोकस करते हो कि आपकी मार्केट शेयर डाउन होती है, सही होती है, तो फिर आप एक्शन लेते हो. समझ आ रही बेटा? यस यस सर. आप इंडिविजुअल पे फोकस करते हो, मतलब एक बंदे पे आप फोकस करते हो कि इस बंदे को मैंने ऊपर लेके जाना है. ठीक है? एक मिनट. यस सर.
जी बेटा, सॉरी, हेलो। जी जी सर। सर। सॉरी, एक वो फैमिली वाले गए थे, उसको क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन करनी, तो उसको कोड चाहिए था। ठीक है, ओके बेटा। तो दैट these are the one of the continuous improvement versus traditional approach. We have a traditional approach. That means we talk about market share, focus, individual focus on who and why. Like for example, focus on कौन है और क्यों, शॉर्ट टर्म फोकस है, स्टेटस को फोकस, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज जिस तरह चल रही है तो उसको उसी तरह आप रहने दें। ठीक है बेटा, एक मिनट। यस सर। ओके, आपने जी सर। प्रोडक्ट फोकस करना है और एक आपने करना है और वो अप्लाई करते हैं, दैट इज द अप्रोच ऑफ दे हैव इम्प्रूव ऑन द इनोवेशन। कि जब तक कोई बड़ी इनोवेशन नहीं हो जाए तो मैं आई डोंट एग्री विद दैट वन। दैट इज व्हाट द ट्रेडिशनल फायर फाइटिंग मीन, व्हेन द थिंग्स आर बर्निंग सो यू जस्ट एक्ट ऑन दैट थिंग। फॉर एग्जांपल, अगर वो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किटेड है तो यू डू नॉट focus on short circuit, but once it's take fire, so then you do the firefighting process. Okay beta, these are the traditional approach. और सर ये स्टेटस को फोकस, स्टेटस स्टेटस को के जिस को तरह जो फोकस चीज किसे जिस तरह कहते हैं चल सर? रही है उसको उसी तरह रहना। ये जो आप कहते हैं कि अदालत से उसने स्टे ऑर्डर ले लिए, ठीक है बेटा, स्टे जी ऑर्डर सर। ले लिए, तो उसका क्या है, वो लिखते हैं द स्टेटस को शैल बी मेंटेन, के जैसे जिस तरह है उसी तरह चलने दो फिलहाल। ठीक है जी बेटा, सर। तो ये स्टेटस को का मतलब है कि जो चीज जिस तरह है, फॉर एग्जांपल एक मशीन है वो खराब है तो बस खराब है, चल रही है, जब तक खराब नहीं होती हम इसको चेंज नहीं करेंगे, जब बंद नहीं यस होती। सर। ठीक है बेटा, एक गेट कीपर है, एक चौकीदार है, वो हमेशा हर किसी से बदतमीजी करता है जब भी वो कोई एंटर होता है, लेकिन उसको बस चल रहा है। तो ये स्टेटस को है। अनलिटिल आपने इसको कोई बड़ा, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी के साथ उसने मिसबिहेव किया, किसी के साथ उसने कोई एटीट्यूड सही नहीं है, तो आपने उसको इग्नोर कर दिया और सिस्टम को चला रहे। लेकिन जब तक आप कहते कि उसने अगर आपके लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया तो आप उसको चेंज नहीं कर। तो ये फायर फाइटिंग है। इसके अगेंस्ट आपकी क्या होनी चाहिए कि क्यूएम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंटिन्यूस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मार्केट शेयर के लिहाज से क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए। आपकी मार्केट शेयर की बजाय आपका फोकस जो है वो किस पे होनी चाहिए, कस्टमर पे। कस्टमर पे। इंडिविजुअल की बजाय आप किस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ग्रुप पे। जब आप एक बंदे पे इन्वेस्टमेंट करते हो उसको ऊपर लेके जाते हो कि नहीं आप टीम पे कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट करें, पूरी टीम आपके साथ डेवलप हो जाए। टीम। टीम पे ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो क्रॉस फंक्शनल टीम। ठीक है बेटा, फोकस ऑन व्हाई एंड हु एंड व्हाई की बजाय आप क्या कर सकता हूं और मैं कैसे कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई आ जाता है, आप इसमें बैठे हुए हैं, आप कहते हैं सर मुझे ये चीज़ चाहिए, या असिस्टेंट साहब या कंट्रोलर साहब मुझे ये, वो कहते हैं क्यों और किसको चाहिए। ठीक है बेटा, अगर आप उसको कह के नहीं प्लान डायरेक्टर है तो अच्छा चलो हम कर लेते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप उसके पास जाएं और आप उसे कहें कि मुझे, तो वो कहते हैं कि क्या चीज़ आपको चाहिए बेटा,
और आपके मैं कैसे मदद कर सकता, कैसे हेल्प आउट कर सकता, दैट इज अ डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, शॉर्ट टर्म जी की सर। बजाय आपका लॉन्ग टर्म फोकस, एक लॉन्ग प्लानिंग होनी चाहिए। स्टेटस को की बजाय आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे काम करें कि फॉर एग्जांपल जो चीज जिस तरह चल रही है उस तरह नहीं, आप हमेशा कुछ ना कुछ पे चेंजेस करें ताकि वो इंप्रूव हो सिस्टम। ठीक है, प्रोडक्ट फोकस की बजाय आप प्रोसेस पे फोकस करें कि किस तरह प्रोसेस को इंप्रूव किया जाए। जब प्रोसेस इंप्रूव होगा तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है बेटा, इनोवेशन की बजाय आप इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट के, इनोवेशन तो एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं ब्रेक थ्रू होती है कि आपने फॉर एग्जांपल पीसीआर किट बना दिए, तो पीसीआर किट जो एग्जिस्टिंग है वो तो चल रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं एक नए किस्म का एक पीसीआर किट, तो उसके लिए आपको इनोवेशन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये वैक्सीन है, अगर पाकिस्तान चाहते हैं कि हम भी एक वैक्सीन बनाएं, तो वैक्सीन के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा अरसा चाहिए कि इनोवेशन लाने में। ठीक है बेटा, तो आप आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट पे काम करें ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव। और फायर फाइटिंग की वजह आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, ये ना हो कि जब प्रॉब्लम ब्रेक डाउन हो जाए तो आप प्रॉब्लम फिर सॉल्व है, वो प्रॉब्लम वो ब्रेक डाउन जिस चीज की वजह से आ रहा था आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है बेटा, Yes, sir. जी सर। जी ओके। सो क्वालिटी थ्रू आउट, a customer impression of quality begins with the initial contact with the company and continues through the life of the product। जैसे आप फॉर एग्जांपल टेलीनार में या किसी कंपनी में आप कॉल करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, जब आप उसको कॉल करते हो और आपकी जो पहली इंप्रेशन उसके साथ शुरू हो जाती है कि उसका जिस तरह आपके साथ एक एटीट्यूड होता है, जिस तरह आपके साथ उसकी बात हो जाती है, तो आपके बारे में भी वो एक व्यू डेवलप करते हैं और आप भी उस कंपनी के बारे में एक व्यू डेवलप करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? जी सर, ऐसे ही है सर। तो ये जो कस्टमर की जो इंप्रेशन है अबाउट अ कंपनी और अ प्रोडक्ट, दैट बिगिंस विद द इनिशियल कांटेक्ट विद द कंपनी एंड कंटिन्यूज टू द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है बेटा, सो कस्टमर लुक एट द टोटल पैकेज। वो इस तरह नहीं था कि मेरी सेल, वो सेल से लेके आफ्टर सेल डिलीवरी पैकेज, इस पूरे पैकेज को एज अ वन आइटम देख रहा है। ठीक है बेटा, सो क्वालिटी एक्सटेंड हाउ द रिसेप्शन आंसर द फोन, हाउ मैनेजर ट्रीट द सबॉर्डिनेट, हाउ courteous the sales and repair people or and how the product is serviced after the sale। तो ये पूरा एक प्रोसेस और आपका जो क्वालिटी है वो फिर इसी तरह चलता रहता है। सो ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी मस्ट स्ट्राइव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर ऑपरेशंस। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो है ये एक छोटा लिस्ट है। ये छोटे लेवल पे जब आप इंस्पेक्शन करते, फॉर एग्जांपल आपका एक मशीन शॉप है, मशीन शॉप है, यहाँ से प्रोडक्ट जाता है फिर दूसरे मशीन शॉप में जाता है। ठीक है बेटा, फिर दूसरे मशीन शॉप में जाता है, इस तरह ये पूरा प्रोसेस है। और फिर ये 5-6 मशीन शॉप से होके यहाँ तक आ जाता है एक फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब यहाँ पे जो मशीन लेवल पे आप इंस्पेक्शन, ये स्मॉल एक छोटे लेवल पे इंस्पेक्शन है, उससे शुरू होके फिर जब आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसको चेक करता है। ठीक है बेटा, फिर ऊपर इसके ऊपर क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, ये सब के ऊपर एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका मतलब है कि ये सारे जो एक्टिविटीज है दैट आर पार्ट ऑफ द TQM फिलॉसफी। ठीक है बेटा, जैसे आप फॉर एग्जांपल बस जब आप किसी दुकान में जाते हो, हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो आप किसी दुकान में जाते हो कि ये किस तरह एवोल्यूट होता है कि पहले आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन से शुरू हो जाए, फिर आपकी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल कॉन्सेप्ट आया, क्वालिटी कंट्रोल से फिर क्वालिटी एश्योरेंस आया, और फिर क्वालिटी एश्योरेंस से आपका TQM ने जन्म लिया। इस तरह जैसे मैं ये हमेशा जब आप किसी दुकान में जाते हो, आप मुझे एक बॉक्स दिखाओ, तो वो एक बड़ा बॉक्स लेता है, फिर जब उसको खोलते हैं उसके अंदर एक दूसरे बॉक्स निकलता है, फिर जब उसको खोलते तो फिर इसके अंदर एक छोटा बॉक्स है, और फिर जब उसको निकलते तो एक 4 बॉक्स का सेट है पूरा। समझ आ रहे बेटा? जी Yes. सर।
तो ये एग्जैक्टली वही है, जो ऊपर जो सबसे बड़ा जो बॉक्स है वो टीक्यूएम का है, उसके अंदर जो बॉक्स है वो क्वालिटी एश्योरेंस है, उसके अंदर जो बॉक्स है वो क्वालिटी कंट्रोल है, और फिर उसके अंदर जो छोटा सा बॉक्स है वो इंस्पेक्शन है। तो ये ऐसा ऐसा इन सब को टीक्यूएम ने कवर किया हुआ है। ठीक है तो बेटा, सर हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि ये सब ये इसके सब टाइप से सब टाइप तो हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो हिस्टोरिकली टीक्यूएम मैनेजमेंट किस तरह डेवलप हुई, टीक्यूएम फिलॉसफी किस तरह डेवलप हुई, ऐसा ऐसा इंस्पेक्शन से शुरू हो के फिर क्वालिटी कंट्रोल ने जन्म लिया, क्वालिटी कंट्रोल से फिर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस से फिर टीक्यूएम ने। तो अगर आप ये भी कह सकते हो टीक्यूएम ओवरऑल है, उसमें ज्यादा फैक्टर है, क्वालिटी एश्योरेंस में उससे कम है, क्वालिटी कंट्रोल में उससे कम है, और फिर इंस्पेक्शन में छोटे से माइनर लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे आपकी इंस्पेक्शन है। ठीक है बेटा, ओके सर। वैल्यू बेस्ड अप्रोच आपकी ये जो हमने पहले भी पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग डायमेंशन और आपके सर्विस डायमेंशन, ये सारी आपकी यहाँ पे फिर एम्पैथी आ गई। मैं अब पूछता हूँ कि एम्पैथी क्या चीज है बेटा, एम्पैथी और सिंपैथी में क्या फर्क है? रूल को फॉलो करके किसी से हमदर्दी करना। ठीक सर ठीक है, ठीक, आपको अब याद होगा मैंने जो आपको एक मिसाल दी थी। यस सर, लगे जब आप ग्रेड देते हो और आप फिर यस आप सर हो। कैसे ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है बेटा, ओके थैंक यू। अच्छा सर ये तो आप टेंजिबल, टेंजिबल इसका क्या मतलब? टेंजिबल का मतलब? टेंजिबल का मतलब है कि आपके पास एक इनटेंजिबल, इनटेंजिबल का मतलब उसका ना मास है ना कुछ और है, और ना आप एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, अगर आप प्रोडक्ट तो ये टेंजिबल प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप सर्विस है तो ये इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो आप फील करते हो चीज। ठीक है बेटा, जब आप कहते हैं कि मुझे लैपटॉप, तो लैपटॉप तो आपके पास एक चीज आ जाती है ना। जब आप कहते हो कि मेरी हेयर कटिंग, तो हेयर कटिंग में क्या चीज आपके पास आएगी? हेयर कटिंग में आप क्या चीज ले जाते हो अपने साथ? सर कुछ भी नहीं ले जाते हेयर सर। कटिंग में तो सर कैंची होती है कि वो कंघी यार होती है, कैंची बंदे, होती है। मैंने कि जब आप हेयर कटिंग करते हो तो वापस आप क्या ले जाते हो अपने साथ? कुछ भी नहीं ले सकते। आप कुछ भी नहीं सिर्फ सर। सर्विस सर। उस बंदे का जो सर्विस बिहेवियर है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस तरह एक्सपीरियंस। काम करता है, वो आपके जहन में एक चीज, एक फील करते हो आप एक चीज, यस सर। तो वो इनटेंजिबल प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, और जब आप का पेशाब से जाते हो तो एक चप्पल लेते हो, चप्पल आप ले जाते हो, पिशौरी चप्पल और सप्लाई वहां से, दैट इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वाज नई दुकान दे, एंड यू कैन टेक एन इनटेंजिबल प्रोडक्ट फ्रॉम हिम। ओके सर। ठीक है, अच्छा, PQM system is a quality continuous improvement that work on customer focus, process improvement and total involvement. उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो। प्रिंसिपल कौन कौन से? कस्टमर सेट फोकस करे, आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट करें और टोटल इन्वॉल्वमेंट करें, सबको इन्वॉल्व करें। ये नहीं कि एक दो बंदे इन्वॉल्व हो, फ्रॉम ए टू जी, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द बॉटम लेवल, ये सब एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व। थ्रू एलिमेंट कौन से? आपकी लीडरशिप होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए, सपोर्टिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिटवीन ऑल दीज पीपल देयर इज अ कम्युनिकेशन, इसमें रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, मेजरमेंट सिस्टम, ये सारा सिस्टम होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम विच यू कैन अचीव द टीक्यूएम सिस्टम। ऑब्स्टिकल, आपके ख्याल में टीक्यूएम इंप्लीमेंटेशन में ऑब्स्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? प्रॉब्लम्स आपके ख्याल में? शबस सर मैनेजमेंट सही नहीं हो, मैनेजमेंट हमारा सही ठीक ना है, हो, मतलब इख्तिलाफात हो नंबर उसमें। वन, नंबर वन, मशीन सही काम कर नहीं कर रहा सर। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट वन, लेक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, जो आपने बात की है। ठीक है बेटा। नंबर टू, इनएबिलिटी टू चेंज ऑर्गेनाइजेशन का, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये एबिलिटी ना हो कि वो अपना कल्चर चेंज करे। ठीक है बेटा। यस सर। इम्प्रॉपर प्लानिंग हो, लेक ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हो। अगर आप ये जो आपने एलिमेंट देखी ना, ये एलिमेंट, यस सर। अगर ये सारी चीजें मिसिंग हो तो आपका टीक्यूएम सिस्टम काम नहीं कर सकता। वो कौन सी चीजें? इन द शेप ऑफ लेक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट,
in the shape of inability to change organizational culture, in the shape of improper planning, in the shape of lack of continuous improvement in training and education, and then incompatible organizational structure and isolated individual department. अगर आपका पूरा डिपार्टमेंट उसमें एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर ना हो और सारे डिपार्टमेंट इंडिविजुअली और आइसोलेशन में काम करे तो दैट डज नॉट वर्क. अगर इंटीग्रेटेड ना हो तो फिर ये काम नहीं करे. ये नहीं हो सकता कि सिविल वाले 1 घंटे का पेपर ले और हम 2 घंटे का पेपर ले, कोई हम 2 घंटे का 1 घंटे का पेपर वो 1 घंटे का पेपर ले. ये सिस्टम फिर काम नहीं करता. ठीक है बेटा. यस सर. Obstacle to the PQM implementation: ineffective measurement technique and lack of access to data. अगर आपके पास डेटा और रिजल्ट नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा जो प्रोसेस है वो सही नहीं है या प्रोसेस. ये तो आप अगर आप वर्कर है या सुपरवाइजर है एक शॉप की और लीडर दें, इंजीनियर दें, आपको कहे कि आपका जो शॉप है उसकी जो मेजरमेंट है या जो डेटा है जो इफेक्टिवनेस सही नहीं है, प्रोडक्टिविटी खराब है, तो आप उसको कह देंगे ना कि मुझे डेटा दिखाओ कि लास्ट शिफ्ट में या लास्ट 1 वीक में मेरे कितने प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ टेक्निक थे. अगर मुझसे कोई पूछे कि आपके इंजीनियरिंग मटेरियल के रिजल्ट में इतने लोग फेल हुए कि क्यों, इतने लोग अगर आप ज्यादा एक ग्रेड किसने लिए, ए फॉर एग्जांपल 50 ने लिए तो क्यों ए ज्यादा लिए, ये क्यों क्या हुआ है. अगर आपके ग्रेड में 50 एफ है तो ये क्यों एफ ज्यादा है. ये पूछ के हमसे होती है. ठीक है बेटा. यस सर. तो अगर कोई मुझसे कहे कि आपका रिजल्ट सही है तो मैं उससे पूछूंगा ना कि आप मुझे डेटा दिखाएं, आप मुझे रिजल्ट दे, आप मुझे प्रॉपर स्टेटिस्टिक दे, तब मैं आपसे बात कर सकता हूँ इस चीज पे. ठीक है. यस सर. paying inadequate attention to internal external. आप इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर को कोई गाज भी नहीं डालते, कोई अटेंशन ही नहीं देते. ठीक है बेटा. And adequate use of empowerment and teamwork. And the last, failure to improve continuity. अगर आप में ये continuously improvement की failure हो तो then you can not implement. So these are some of the obstacles that can hinder the improvement and implementation of the TQM in the organizational level. Okay बेटा. आगे जाऊं. यस सर. सर आज के लिए इतना काफी नहीं है सर. सर पर आगे बहुत ज्यादा है सर जी. हाँ सर आगे स्लाइड ज्यादा है सर जी, पर 60 तक जाना है सर. अच्छा चलिए इस तरह कर लो बेटा. बिफोर गोइंग टू दिस वन मैं आपको एक चीज दिखा, तो आप लोग इस ट्रेनिंग को खामखा अटेंड करें क्योंकि इसमें हम एक 5S का ये जिक्र करेंगे. ठीक है बेटा. ये 5S. तो 5S आपके लिए मैं आपको एक टूल देता हूँ. एक आप जाएंगे, ठीक है, किस पे बेटा, फेसबुक पे. ठीक है. फेसबुक पेज पे सर जी. फेसबुक जाएं. ठीक है. and you just look for association of United Nation Association of Pakistan. ठीक है बेटा. एक मिनट. अच्छा ओके बेटा. समझ आ गई बेटा. एसोसिएशन यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान. ठीक है बेटा. इसको फॉलो करें, इसको लाइक करें. ठीक है बेटा. समझ आ रही है. और ये देखें, ये क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल अक्रॉस पाकिस्तान. यूएनएफ इज पार्टनरिंग विद टोयोटा मोटर and provide free training section with certification. The training take inspiration from today Toyota 5S workplace philosophy and teach individuals to apply in their daily lives. To become more organized, more productive, and more efficient, Toyota has a deep focus on 5S and safety, and we also teach how you to be safe, which is especially vital during the pandemic. Register now
at the link below and become eligible to attend our session and win cash prize. For detail, आप ये फ्री में अटेंड करें, 1 या 2 घंटे का ऑनलाइन सेशन है इनका, ठीक है बेटा? जी सर। ठीक है, और आपको एक टोयोटा की तरफ से और यूनाइटेड नेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। उसमें एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट आप कर ले ठीक ठाक तरीके से, मतलब ऑनलाइन क्विज है, जिस तरह हम ऑनलाइन लेते हैं ना आपसे, उसी तरह क्विज है उसमें। यस सर। ठीक है बेटा, और आपको प्रॉपरली एक सर्टिफिकेट में मिल जाता है। ठीक है, लेट मी शो यू द सर्टिफिकेट, कि किस तरह आपकी जो सर्टिफिकेट है वो है। मैंने की है खुद, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, तो आपके लिए जरूरी है। ठीक है बेटा? यस सर। और आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें सर, लिंक हर टाइम ऑनलाइन होता है सर जी? ये आपको बताएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको बताएं कि इस डेट पे ट्रेनिंग होगी, तो आप अपने लिए फिर सेलेक्ट करके कौन से डेट पे आपने ट्रेनिंग करनी है। ठीक है बेटा? एक दफा करना है ट्रेनिंग का? हर कोई कर सकते हैं, तो कहता हूँ आप सारे कर लो, एक बंदा नहीं, हर कोई कर। एक ट्रेनिंग है ना उसमें, तो नहीं सर, 2 घंटे की ट्रेनिंग है। एक दफा करना है तो यार तुझा माँ खबर लगा और पखाओ तुला चप शुद्धा था किसे कौन कर इस तरह की आदमान दे हर सगट वर्ड को शेखा। ये देखिए आपकी सर्टिफिकेशन, इस तरह सर्टिफिकेट आपको अवार्ड हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? यस सर। ओके, तो आप इस लिंक पे ले जाएं। ठीक है, इस लिंक को मैं आपके पोस्ट पे शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, ये देखिए, लेट्स सी, ये समझ आ रही बेटा? ये आ गया आपको? यस सर। ये रजिस्टर नाउ। ठीक है बेटा, ये आपकी और आपकी ये जिसने सर्टिफिकेट मुझे शो किए, आपको उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। समझ आ रही है बेटा? यस सर। सदामुत ऑनलाइन है कि सर्टिफिकेट सर जी? मैंने आपको क्या कहता था, अच्छा तो बला खबर होगा ना कि कौन है खाला का शेख। लिंक ओके, वसफाया तो सब बेटी वसफाया सदामुत ऑनलाइन मिलेगा सर्टिफिकेट सर जी को? द ट्रेनिंग गुन ऑनलाइन दे और सर्टिफिकेट पर ऑनलाइन या एग्जाम इन ऑनलाइन दे। सही है जी। आ एग्जाम पागा 2 घंटो या 1 घंटा सेशन दौरान के दे। सही शो बजे? सही है जी। ठीक शो, everybody has to do it and everybody has to show me the certificate. ठीक है बेटा? सरदा फेसबुक ले लाओ बबल समाई नहीं की गई यार फेसबुक पान देने पर जूम मान रे पर समान दिया पर गूगल मीट पान दिया गई बता तो पहले लिंक रोली की करना संग चिता तो मुंग दा लिंक दली तो शान बाबू तुझे कल रजिस्ट्रेशन के ता तो भाई ईमेल ऑफिशियल ईमेल कल रिसीव शी यू विल बी एबल टू डू इट। वो ख्याल करो कि तुम ऑफिशियल ईमेल यूज करो। ठीक है बजे? सदा बता पोए को सर जी? हां ते पोए का बचे हां ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सादा कर सलाम। ओके सर सलाम दा सड़े बदे पोए की हां
सर जी असल के फेसबुक नहीं इस्तेमाल होगा ना उसको कमा दे वेले से फेसबुक नहीं ता इस्तेमाल तो मादा फेसबुक लिंक नहीं इधर सेंड करे ता तो मादा वेबसाइट लिंक सेंड को सर पे डैशबोर्ड बांधे सिर्फ फेसबुक बांधा वही पेज दे माय लाइक का जिता तो पता लगी जी द्वी सकै तो जी फेसबुक ना सब नहीं यूज सर किए तो बस सबर को जुदा रिकॉर्डिंग आप कम ठीक शो बजे सर क्वेश्चंस एनीथिंग एल्स नो सर। नो सर रिकॉर्डिंग आप कर दो बेटा यस जी सर। सर रिकॉर्डिंग आप कर ओके बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फाइव जो टीक्यूएम के टूल्स है उसको डिस्कस करेंगे ठीक है बेटा ओके सर। ओके सर ओके लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग थैंक यू